Okay, so when we talk of sociology or something like that, gender study or many other subjects, they are comparatively easy as compared to other subjects. First of all, I would say that in sociology, in the beginning, I'm going to discuss, I'm going to share with you that what we will study in sociology. Sociology relates with society. For example, when we talk of society, what the idea you have in your mind. Okay, sorry, I'm going to just speak. If meanwhile, if you have any confusion or if you want to say something, so always feel free, you can send me message. So at the same time, I would also respond your queries as well, because I want to make this session very interactive rather than just going to speak by myself. Okay, anyhow, what I was telling you about sociology. Okay, so sociology relates with society. When we talk of society, society is composed of individuals. When we talk of individuals, for example, we say that this is a Pakistani society, this is a rural society, this is urban society. At the same time, we say that this is a Western society, this is Islamic society. When we use the word society, it means there are certain individuals who are going to constitute that society. Okay. Then the other thing is important, that what is the role of individuals in that society. So roles of individual in this sense, that what are the factors which are going to empower society, they're going to strengthen society, and what are the factors on the basis of which societies collapse. In which societies, what sort of people they have their own attitude in their own living surroundings, and how you can say that that is comparatively different from other societies, and what could be the possible factors which bring change in society. So that is the overall scope of individuals' life that is going to be discussed in sociology. Okay, the other thing is, when we talk of certain other areas, now I have shared my own thing about, and you know very well that what you are going to study in this discipline, in this subject. So obviously sociology means study of society. And what could be the possible areas? I have also shared with you that what is the culture and how culture strengthens individuals in a society, and what are the factors which bring change in society, what are the reasons on the basis of which certain individuals, they are going to have a more inclination towards certain factors. For example, you can take example of suicide, that why suicide rate is going to high. So that would be the subject of sociology. When you say that why terrorism is going to get high in our society or in an Islamic society, or when you talk of Islamophobia in the eye of Western culture, so all these areas which are going to influence individuals in a different way, and they're going to change individual thinking, so that would be the part of sociology. Even you can say, for example, in 21st century, when we talk of digitalization, that it is going to get more popular, and even when you talk of your traditional way of delivering lecture, so we are going to move from on campus to off campus, and especially we are going to take support of certain devices as well, just to get communicated and just to convey our own ideas with others. So that is also, you can say, that is a major change in individuals' lives, and that is a major significant factor which is going to influence individuals, and that is going to shape our own thinking. So every possible thing, every possible idea, every possible, you can say, field where you believe that individuals, they are going to get changed, and that is going to change our perception, so that would be the part of sociology. Okay, so in sociology subject, basically three things are very important. First of all, you must be aware of certain concepts. Concept means what is social change, what is culture, what is social control, what is social mobility. So everything that relates with the individuals. That's why we are going to use the word social, social, and social. So as you know that this part is very easy as compared to other. So even you have not prepared very well, but it depends on your current affairs, and it depends on your other preparations as well, that if you are good in your other subjects, automatically you will feel good in attempting these questions. The other possible area that relates with the sociology, that relates with certain sociologies,
this is to some extent, it seems to be a bit difficult in this sense that unless you are going to have a look over those sociologists, maybe you will not be in such positions that you are going to attempt by yourself. So this is a thing that where you need to focus. But how much time you are supposed to spend in order to prepare yourself for sociologists? So you can say 3 to 4 days. I think so they would be sufficient in this way. And even when you talk of a certain difficult part, even that part could be done only with 3 to maximum, you can say 5 days, not more than that. But if you're going to spend 6 to 8 hours per day, so I think so that you can do even in 2 hours. So that's not a big problem. And the other thing is that there's an area relating to certain research part, that what is qualitative research, what is quantitative research, what could be the possible advantages of survey, and can you give any example of what are the stages of research process, and can you develop any hypothesis, and how you are going to make research, and so on. So you can say that 1 to 2 days they would be spent on that. Is it clear to you what I am going to say with you? Have you any confusion, please? अगर आपको confusion है तो always feel free. It's clear. Clear. That's good. Okay. So that was about sociology. जी जी. अस्सलामुअलैकुम सर, सोशियोलॉजी जो है उसके लिए आप रिकमेंड करेंगे बुक्स वगैरह या नोट्स वगैरह कुछ भी, या इंटरनेट से कोई मटेरियल प्लीज? Okay. So basically, when you talk of certain books, I would say that the book Sociology that was written by Abdul Hamid Taga, I think so that is sufficient, but not necessarily that if you are going to study and you're going to prepare yourself through Abdul Hamid Taga, so you can say that 100% you are going to prepare, 100% you are going to attempt in your paper. So basically, the book that was written by Abdul Hamid Taga, that is good in this sense that it will make your thinking very well. It will give you good concepts. It would enlighten your approach, and it will keep you on right track, except the part of sociologists. The other things, they are very good in Abdul Hamid Taga, and it is very easy book. And believe me that even within 3 or 4 days, you can study even by yourself. So that is not a big problem. And the beauty of this book is that it relates with Pakistani society, because there are many concepts and there are many questions which are directly related with Pakistani society. When we talk of certain other books like Houghton and Hunt book, a sociology book that was written by Houghton and Hunt, this is a very good book, but because many examples are going to be derived from Western society, and when we talk of examiner approach to handle certain questions, examiner focus is just to deal with Pakistani society. So sometimes students, they feel themselves very blank and they feel uncomfortable while attempting such questions, because they can say that they cannot write by themselves. So I think so that it depends on your approach. And if you're going to study any book that is written by Pakistani author, I think so it would be in your own favor. So Sociology by Abdul Hamid Taga, that seems to be very compatible, and it is a very excellent book, except sociology's part, because the contribution of sociology sometimes, most of the time, examiner that is going to ask a certain full-fledged question on any sociologist, and not necessarily that examiner is going to focus the all contributions, the all points of one sociologist. So sometimes examiner is going to focus just one of the points of any sociologist. So maybe you would find difficult in finding material from Abdul Hamid Taga book. So that's why I'm going to say that you have to exclude sociologists, but as well as other topics are concerned, it seems to be good. But if you're going to take lectures of sociology with me, I don't think so that you need to get worried, because I would give you each and everything and you would feel comfortable. Don't feel yourself in panic situation. But overall, I would say that Abdul Hamid Taga book is very good, and this is very excellent book as compared to Houghton and Hunt. There is no harm if you want to study more than one book, but at the same time, you are not going to get any PhD in your sociology or in your CSS. Your focus is that you want to qualify and you want to get your own preferences. So that could be only possible when you're going to have a smart preparation. Smart preparation doesn't mean that you have to just select few topics and you have to forget everything and you are going to just focus on one subject at the cost of other subject. Smart preparation means that you have to
divide your time in this way that you would feel comfortable in attempting questions relating to all subjects, and even you are going to spend more time in one subject, but that should not be compromised with other subjects. So that means smart preparation. Don't try to develop the meanings of smart preparation according to your own philosophy, but just focus in your examination viewpoint that what is your requirement, what are the areas on which you need to highlight, and what are the areas on which you can give less attention. And secondly, your preparation is important, but at the same time your general knowledge is more important as compared to any other thing. For example, if you talk of certain you can take example of current affair. Even if you feel good, if you feel good at current affair, this is my own experience, that you can qualify your CSS if you can write your essay error free, and if you can get yourself passed through your CSS exam as well as your press and composition. So basically, that knowledge is helpful in your every subject, optional subject as well as your compulsory subject. Because the examiner approach is, you have to understand the objective of CSS exam. Basically, FPSC wants to recruit you against certain seats where you are going to have a leading role, where you are going to develop certain policies relating to various departments and so on. So their concern is that they want to have a certain lots young students, are the young students who are very motivated and who have certain good approach in handling different things. So that's why when we talk of your practical exam, so basically they give you questions relating to your opinion related questions, and they give you where certain analysis is required, that how you're going to handle things. So that's a reason that when we talk of CSS exam, that is very comprehensive and it is very detailed, that first of all you have to prepare yourself, then your written exam, then you have to appear in your psychological exam, and that is for 2 days, then finally you have to go through the interview, and then it depends on your merit whether you would be allocated or not. So basically that is a very, you can say that is a panic process, and it takes almost 2 years from your preparation to your still your joining. So around 2 years, 1.5 and 2 years almost it is taken. So basically their concern is that how much consistency you have in handling certain pressures. At the same time, what is your approach in solving problems. So basically when we talk of certain questions, so examiner focus is that he would give you general question, that what is your opinion. When we talk of your opinion, so it means your general approach, your current affair knowledge, as well as your knowledge that is in your previous degrees, that is also very important. So you cannot say that whatever you are going to study in any subject, that would be helpful, that knowledge would be helpful particular to only that subject. But I think it depends on you that how you're going to relate with other disciplines. This is entirely up to you. And even in CSS, whatever the knowledge you have, if you are good in adjusting that knowledge in various things, so I think that would be your plus point. So don't go for this 2 + 2 4. Try to make yourself try to make your mind open, and try to think in different ways, and try to apply different theories irrespective of other disciplines. So you have to apply different theories at different stages so you can get good marks, and automatically that is going to make a comparison on your paper. Because you know that all the students, they are going to get knowledge from the same teacher, and they have the same preparation. What is the reason that some students they get high score and some students even they are unable to get past? The only thing is, if you are going to just focus in a you can say in a narrow approach, and you are not going to enlighten your own thinking, then I think so it will become very difficult for you. Any other question, please? I hope so that I have given you answer. Sir, I wanted to ask that, is it relevant with gender studies? Okay. Basically, they are related in this sense that sociology is a study of individuals, and individuals constitute society. But when we talk of gender study is related to individuals' role. So when we talk of in a broader perspective, then that is become the domain of sociology. In broader perspective, in this way, that what is the reason for industrialization, what are the impacts of urbanization, and what are the reasons for any social problem,
and how you are going to make. So these are the areas, broader perspective. What are the characteristics of rural society? What are the characteristics of urban society? So that is in a broader perspective. When we talk of gender studies, so we are going to confine ourselves to a limited situation. Limited situation in this sense that why individuals, especially when we talk of that why women, they are going to be given not significant role in politics. So here we are not going to talk the role of overall individuals and about politics. So we are going to just focus on women. Okay, that is the difference. But when we talk of some sort of similarity in this sense, that if you know that what are the social factors that how society puts influence on individuals in shaping their thinking, so basically that would remain the same. And even if you're going to apply this concepts on women, or even you're going to apply this concept to transgender, so you would get the same answer. That basically certain psychological issues, it depends on your facilities, it depends on education, it depends on religion, and it depends on many other factors. So even when we talk of certain topics about sociology, so these factors remain the same. But when we talk of certain in narrow perspective, even then the factors remain same. So yes, in this sense, you can say that you would get the advantage, and overall you would feel not 100% you would feel the similarity. But again, I'm going to say that it depends on you, that how you are going to develop your own approach. This is more important. And if you are good in developing such approach, then I think so that you would find much similarity. But when you talk of certain contents, maybe you would feel no some sort of similarity. Any other question? Sir. Yes, welcome, Sam. Sir, as comparison to course contents, it looks like too much and insufficient content. And what is your opinion? How we can prefer our regional languages like Punjabi? आपका जो क्वेश्चन है, जो कि मुझे समझ आइए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सोशियोलॉजी है वो कंटेंट के लिहाज से डिटेल लग रहा है? यस सर, बिल्कुल। ठीक है, ओके सर, अनफेमिलियर है हम इसके साथ, फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं। और अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने पहले क्या किया हुआ है? पहले सर एमफिल किया हुआ है एग्रीकल्चर साइंस। अच्छा, जो आपके बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या हैं? सर पॉल साइंस है, इसके साथ जीपीपी है एंड एनवायरमेंटल साइंस है बस। और ठीक है, तो अजय साहब, कैन यू टेल मी जस्ट वन थिंग, दैट वेदर आर यू familiar with other disciplines? No, sir. No. The thing is that it doesn't depend on my choice or your choice. We have no option, because if you are going to make your mind to appear for CSS exam, so you have very limited choices, because they have given you a list of subjects and you have no option just to select certain subjects which are mentioned in that list. Then the other thing is that first of all, our choices have been finished. The second stage is that you need to opt those subjects which are comparatively compatible. You can say that comparatively they are easy and they are compatible as compared to other subjects. So yes, sociology, gender studies, or something like that, that they remain very feasible. Yes, if you say that, sir, I'm facing difficulty in attempting in opting sociology with other discipline, then I can give you better answer. But if you say just that I'm just blank, and at the same time whether I can do, so I think you have very limited options. So you have no due to limited options, you have to go for it. The thing is, because it relates with your society. Okay, and I have mentioned earlier that in CSS exam, your knowledge is more important, and examiner concern is they also know very well that students, they do not necessarily, even you have a degree in certain field, so basically you have to go for 12 exams, and that is same for every student. They are well aware of this issue. This is the reason that mostly in your optional subjects you don't get failed and questions remain very easy. So their concern is that how you develop your approach in a different way. So how you can do it, that you have to
have more reading. And how you can improve your reading? The only way to improve your reading is that they are going to make contents very vast, that maximum knowledge you can gain. It doesn't mean that you need to get each and everything should be at your fingertips, but their concern is that at least you must be aware of certain issues, and you need to make your approach more in a broader context, that you can think at a global level rather than just in a narrow approach. So that is a concern. And I told you earlier that in your sociology, the certain questions, they are related with your society, and it depends on your general approach. For example, let me share one paper with you of 2020 exam. It would helpful for you to have some sort of satisfaction that whether you can attempt this subject or not. Okay, I'm going to share paper with you 2020 sociology. The first question is, differentiate between a social change and social structural change. 3 key areas which need immediate attention of policy makers. Okay, so if you know very well what do you mean by social change, I hope so that many of you they would be well aware of these concepts. And what is a social structure change? Do you know about social structure? What is social change? Can you answer me? Any one of you? The change in social behaviors of individuals. Excellent. That is social behavior, change in social behavior. Excellent. Okay, and what is structural change? Society change. सोसाइटी के स्ट्रक्चर में, यानी कि सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन में. ठीक है. Okay. What are the 3 key areas which need immediate attention of policy maker? ठीक है, कि कौन से 3 फैक्टर्स हैं जो सोसाइटी के बिहेवियर्स को चेंज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है, और उसके अलावा अर्बनाइजेशन हो सकती है, और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है. यही रीजन है ना कि लोग मूव करते हैं और जिनके लिए लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं. मेन तो यही चीजें है ना. इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या फर्दर इंपैक्ट आता है उनकी इकोनॉमिक पे, अर्बनाइजेशन का क्या आता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका एजुकेशन है, हेल्थ है, और ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से आपकी इमिग्रेशन के और बाकी चीजों के इश्यूज हैं. यही मेन रीजन है. तो अब ये वो चीजें हैं. देखिए, कुछ जो सब्जेक्ट्स होते हैं, अब मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में यू डोंट हैव मच ऑप्शन. ठीक है, कि जो उसने पूछा है ना वही फार्मूलाज ही लगेंगे, उसमें आपके पास ऑप्शन नहीं होगी. ओके. तो जब आप सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो दे आर वेरी कॉन्सेप्चुअल, और इस कॉन्सेप्ट जब आप कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं या कॉन्सेप्चुअल सर्टेन हेडिंग्स की बात कर रहे होते हैं, तो नॉट नेसेसरली दैट यू वुड गिव एग्जैक्ट आंसर. The only thing that is on your part, which examiner is going to expect, that you need to get more, you need to have better understanding of this that point, and you need to give examples. और वो आपके पे बिहाफ पे है कि आपने कौन सी एग्जाम्पल्स देनी है और कौन सी एग्जाम्पल्स आपने नहीं देनी. तो इसलिए ये थोड़ा से जो सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें आपके लिए काफी जो है ना वो आपके लिए आसानी हो जाती है. अच्छा, मैं दूसरा भी क्वेश्चन पढ़ता हूँ. राइट नोट ऑन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सोसाइटी. कि सोसाइटी के टाइप्स क्या होती हैं. ठीक है, रूरल अर्बन होती हैं. इस पे अपने 10 मार्क्स का ये है. और कास्ट और क्लास डायनामिक्स इन पाकिस्तान, के जो कास्ट है और क्लास है इसके डायनामिक्स, के क्लास का इंपैक्ट आप पे क्या आता है और इसका स्कोप क्या है, और इसी तरह कास्ट है उसका क्या इंपैक्ट है और किस तरह सोसाइटी पे इन्फ्लुएंस होता है. कि मसलन आप पठान है, आप पंजाबी हैं, आप बलोच है, उसकी वजह से आपके जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो ज्यादा हो जाएंगी या कम हो जाएंगी. ठीक है, मसलन आप अगर बात कर लें कि चलें, अगर नॉट नेसेसरली मैं जनरल बात कर रहा हूँ, कि आप अगर फॉर एग्जांपल बात कर लें फाटा की फीमेल की जो कि वहां पे रहने वाली है, तो क्या उसके पास उस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि एक फीमेल इस्लामाबाद में रह रही है? नॉट एट ऑल. ठीक है, इसी तरह आप बात कर लें बाकी आप बिहेवियर्स की, आपके जो राइट्स हैं, आपके राइट्स क्या हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके राइट्स जो है, आप कहते हैं कि आपके राइट्स है राइट टू एसोसिएशन की बात कर, पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं, तो जो लोअर क्लास में लोग होते हैं उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और जो अपर क्लास के लोग उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं. सो आई कैन थिंक कि इस तरह आप उसको एलैबोरेट कर सकते हैं. इसी तरह आप और एक एग्जांपल देना चाहें तो हम कहते हैं कि जिस तरह ये मैरिज है, मैरिज इंस्टीट्यूशन है, तो मैरिज इंस्टीट्यूशन में जो कास्ट है उसका क्या रोल इंपॉर्टेंट है. कि जिस तरह सर्टन कास्ट हैं उनमें उनके पास ऑप्शन नहीं होती कि आप अपना जो राइट टू मैरिज है उसको आप एक्सरसाइज कर सकें. ठीक है, फिर हम कहते हैं कि जो क्लास है, क्लास में जो क्लास है वो बेस करती है मटेरियलिज्म पे, उसमें इकोनॉमिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, जिसकी बेसिस पे वो बनती है अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास.
ठीक है, और लोग उसी तरह से फिर अपनी जो एसोसिएशन उसको बिल्ड करना चाहते हैं। और जो कास्ट है, कास्ट में आपकी जो मटेरियलिज्म है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, उसमें आपकी जो बिलोंगिंग्स और आपकी अफिलिएशन और आपका जो ओरिजिन है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल कि आप कोई भी कास्ट ले लें, कौन सी कास्ट लेंगे? चलें आप राणों की ले लें, राजपूत की ले लें, कोई ले लें, ठीक है, या आप इनकी जाट की ले लें। ये चौधरी बिरादरान है पंजाब में, तो अब फॉर एग्जांपल जो चौधरी बिरादरान है वो हमेशा जाट की बड़ी सपोर्ट करते हैं। अब एक आपकी कास्ट का चाहे वो आपके इकोनॉमिकली तो स्ट्रॉन्गर नहीं है, बिकॉज यू हैव सेम ओरिजिन, जिसकी वजह से वो उनको सपोर्ट करते हैं। जिस तरह आरआईओं के बारे में कहा जाता है कि वो एक दूसरे की बड़ी सपोर्ट करते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये आपकी अपनी जनरल ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड कर रही होती हैं, और आप उनको चीजों को सोसाइटी में एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो जस्ट इन्हीं चीजों को आपने एलैबोरेट करना है पेपर में। ठीक है, ओके, मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूं आपसे। हाउ कैन मॉरल डिजेनरेशन बी साइंटिफिकली स्टडीड? ठीक है, डिक्लाइन द इंटायर रिसर्च प्रोसेस। अच्छा, ये तो खैर आपको नहीं आएगा। ओके, दुर्खाइम emphasize the functional aspects of a religion, कि जो रिलीजन है, रिलीजन का रोल क्या है। However, we observe many instances of religion extremism, कि जो रिलीजन है, ये तो आपको पता है ना कि जितने भी रिलीजन्स हैं उनका जो फोकस है वो इंडिविजुअल्स की वेलफेयर है, उनका जो फोकस है वो सोसाइटल इंटीग्रेशन में है, उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो एक सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना है। यू नो वेरी वेल। वो कहता है कि उसके बावजूद जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है वो क्यों बढ़ रहा है। पाकिस्तानी सोसाइटी शेड सम लाइट ऑन दिस फेनोमेना। अब ये देखिए, ये कितना इजी क्वेश्चन है। तो अगर आपका जो पेपर है उसमें आपके पास 7 क्वेश्चंस आते हैं, और 7 क्वेश्चंस में से आप, ये मैंने रिसेंट पेपर आपसे शेयर किया 2020 का, तो इसमें से आप ये देखें कि आपने विदाउट हैविंग एनी अंडरस्टैंडिंग एंड विदाउट ओपनिंग बुक ऑफ सोशियोलॉजी, and even you were getting confused that you have agriculture background and you have not prepared yourself very well, so whether that makes you compatible that if you take certain decisions to go for this subject or not. So I would say that you can, now you can examine and you can evaluate your own thinking, that if you without preparation you can attempt 3 questions, and if you are going to just if you are going to exert just little effort, so obviously you can attempt 4 questions. So that is your requirement totally. So you are free now. So I believe whatever the subject you are going to choose, just go through the past papers, make your own compatibility, that whether it is up to your own mental aptitude or not. Because of, finally in your exam you are supposed to attempt. मैंने जो करना था वो कर ली है, पेपर में अब आपने attempt करना है. So I think so that you must have some sort of satisfaction. Yes, the only thing that you can share your own reservations with me and I can redress. It doesn't mean that you have to get satisfied with me 100% के साथ ने कहा तो हम ये कर लें. Not at all. You are very mature students. You know very well that what is your strength, what is your weakness. So I can just share my own experience, that what could be the things that you need to consider if you want to prepare yourself very well. तो जब भी आपका एक सब्जेक्ट है, मसलन मैं आपको अगर मैं अपनी एग्जांपल्स दूं, तो जब मैंने सीएसएस की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैंने तकरीबन 4 मंथ से मैंने भी किया था। तो जब मैंने स्टार्ट की थी तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि जो लिटरेचर है उसमें मार्क्स नहीं आते। अब मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट था, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट था कि मैं वो सब्जेक्ट्स रखूं जिसमें मैं पेपर को 100% अटेम्प्ट कर रहा हूं, क्योंकि दैट इज आल्सो ब्लेसिंग कि आपको सारे क्वेश्चंस आते हो या आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये मुझे, जिस तरह मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इन सब्जेक्ट्स में लोग ज्यादातर फेल नहीं होते। ठीक है, अब हाँ, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो ठीक है। हाँ, ये तो नहीं है ना कि पेपर में कुछ लिखे ही ना तो फिर आप कहेंगे आप पास हो जाएंगे, तो नॉट एट ऑल। या अगर आपको कुछ आता भी है, आप अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन आप पेपर में उस तरह की रिफ्लेक्शन नहीं लेके आ सकते अपने पेपर में, तो डजंट मीन दैट यू आर गोइंग टू हैव गुड स्कोर। तो मेरा सिर्फ ये फोकस था कि मैं पेपर को, जो सारे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को 100% अटेम्प्ट कर सकता हूं कि नहीं। एक मेरा ये ऑब्जेक्टिव था जब मैं प्रिपेयर कर रहा था। दूसरा मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि एटलीस्ट आई नीड टू गिव मोर टाइम on my essay and my press and composition, because
आपका नो डाउट के कंपल्सरी जो आपके बाकी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं या जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम गोइंग टू से वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सेंस कि आप ऐसे जितना मर्जी भी आपका अच्छा हो, आपका जो, मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, एवरेज स्टूडेंट्स जो हैं वो यही आते हैं 45 से 55, इससे ज्यादा नहीं आते। एक्सेप्शनल स्टूडेंट 70 या कुछ ऐसा, कुछ लोगों का वो लग जाता है जुगाड़ कि उनके ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन जो रूटीन में मैं बात कर रहा हूँ तो वो 45 से 55, ठीक है। और इसमें भी आप देखें तो जो टॉप पर आप देखते हैं ना कि टॉप पोजीशंस पे लोग फॉल कर रहे होते हैं, तो ऐसे में वो भी 40 से 45 की रेंज में ही आ रहे होते हैं। तो आपको जो टॉप पे लेके जाता है, सब्जेक्ट्स लेके जाते हैं, वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आपके ऑप्शनल कुछ स्टूडेंट्स, आपको ये भी, यानी कि 2009 में अगर मैं अपनी बात करूं तो उस वक्त हमारे साथ कुछ लोगों ने कुछ लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ था, मेरा ख्याल है वो इस्लामिक सिविलाइजेशन को, इस तरह का एक सब्जेक्ट था, या इस्लाम में मेरा ख्याल है इस्लामिक इलेक्टिव में इस्लामिक स्टडीज थी या कुछ इस तरह से ना, एक सब्जेक्ट था, आई एम अनएबल टू रिमेंबर राइट नाउ। तो Islamic उसमें history, sir. एक जो फीमेल स्टूडेंट थी उसके 190 मार्क्स आए थे, तो एक, लेकिन वो इंग्लिश में फेल हो गई थी। तो नॉट नेसेसरली कि आप किसी सब्जेक्ट पे इतना फोकस कर दें कि उसके बाद आप बाकी सब्जेक्ट्स में पास ही ना हो सकें, या आप इंग्लिश पे उतना फोकस ना कर सकें, तो उसका तो कोई फायदा नहीं। आप 190 ले लें या 199 ले लें, तो बजाय ये कि आप 100 मार्क्स 120 से ज्यादा ले लें और आप बाकी सब सब्जेक्ट्स में पास हो जाएं, तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो मेरा ख्याल है अर्जित साहब, आपका ये क्वेश्चन काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि सोशियोलॉजी जो है वो आपका बैकग्राउंड नहीं भी है, तो क्या सोशियोलॉजी आपके लिए एक सूटेबल ऑप्शन रहती है या नहीं रहती? सर Yes, sir. एक्सक्यूज मी, जी जी। सर पास पेपर्स का सोशियोलॉजी में कितना रोल है? मतलब हम लोग जो है वो पास पेपर्स को कितने 2013 तक या 12 तक कहाँ तक करें, क्योंकि 2015 में कोर्स रिवाइज भी हुआ था ना सर। क्या रिवाइज हुआ है? चीजें तो वही है सारी। बताएं जरा, पहले आप बताएं ना क्या रिवाइज हुआ है। सर आई डोंट नो एक्चुअली, मेरा बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। अच्छा, नहीं कोई ऐसी बात नहीं है सिद्रा, उसमें सिर्फ ये है, उन्होंने एक सोशियोलॉजिस्ट बस ज्यादा डाल दिया है। और आप पेपर्स 2000, आप इसका 2013 की बात कर रही हैं ना, आप 2006 का पेपर निकाल लें और 2020 का निकाल लें, सेम होंगे। देखिए मैंने आपको ओवरऑल चीजें बता दी हैं कि उसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये होगा कि आपको सोशियोलॉजी वही है, वही अगस्त कॉम्टे है, वही दुरखाइम है, वही सारा कुछ है, ठीक है। और एक रिसर्च का है, तो वो भी चीजें वही रहती हैं, रिसर्च टूल्स और किस तरह आपने रिसर्च करनी है, रिसर्च के प्रोसेस क्या होंगे, वो भी सेम है। जहां तक बात कल्चर की है, तो कल्चर भी सेम है। देखिए ना, कल्चर की जो एसेंशियल्स हैं, हम कहते हैं कि कल्चर में नॉर्म्स होती हैं, कल्चर की वैल्यूज होती हैं। वो वैल्यूज तो चेंज हो सकती हैं, लेकिन वैल्यू को कल्चर से एक्सक्लूड तो नहीं कर सकते ना, कि आप कहें कि जो आपकी वैल्यूज हैं, आपकी वैल्यूज का कल्चर पे इंपैक्ट नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। आपकी एग्जांपल्स डिफरेंट हो सकती हैं, कि मसलन आप कल्चर की एग्जांपल आज की सोसाइटी में दें तो आप कहते हैं जी कि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, दैट इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर। आजकल आप जो है इसको वो करते हैं, यानी कि इवन कि मैं आपको वो मेरी दोस्त से कल बात हो रही थी, तो उसको मैंने बता रहा था कि यार साइकोलॉजिकली, चाहे आपको कोई इशू ना हो, लेकिन साइकोलॉजिकली ये जो कोरोना है इसका काफी इंपैक्ट आया है इंडिविजुअल्स पे। कि मेरे जो कोलीग मिलने आए, तो मैं पहले से ही ना, मुझे था कि यार ये मेरे से हैंडशेक ना ही करें, तो मैंने दूर से सलाम बुला दी और हाथ मैंने ना पीछे कर लिए ना, कि ताकि ये खुद ही नहीं करेगा। तो वो मैं उससे हंस रहा था कि यार वो, क्योंकि मुझे बेचारा मिलने आया हुआ था, तो उसने जो है ना वो मुझे गले मिला, फिर मैंने भी मिल लिया। मैंने कहा चलो अल्लाह मालिक है, चलो मुझे जिंदगी इंपॉर्टेंट है तो इसको भी तो है ना। तो अब ये देखिए कि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, ये पहले तो नहीं था इस तरह कि आपका कोई क्लोज आपको फ्रेंड मिलने आ रहा हो और आप इस तरह का एटीट्यूड हो कि आप उसको अच्छी तरह से वेलकम ना करें या उसको अच्छा ट्रीट ना करें। तो अब ये जो कल्चर है, अब ये हो सकता है कि आप 2013 के पेपर की बात करती तो ये एग्जांपल ना उसमें फिट आती, लेकिन आप अगर कोई किस तरह का क्वेश्चन आता है तो हो सकता है कि जो सोशियोलॉजी है उसमें ये इसका कोरोना का क्वेश्चन आ जाए कि ये कोरोना इसने इंडिविजुअल्स बिहेवियर को किस तरह से चेंज किया है या सोसाइटी पे इसका क्या इंपैक्ट आया है। तो दैट इज अ वेरी रेलेवेंट टॉपिक राइट नाउ। तो आपकी एग्जांपल्स डिफरेंट हो सकती हैं, जहां तक कॉन्सेप्ट्स की बात है दे रिमेन सेम। तो वो 2013 का हो, 2020 का हो या 2000 का हो, वो सेम रहता है। आप 1980 का पेपर भी निकाल लें, सेम होगा। क्लियर है सिद्रा? यस सर। जी, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो आपका?
कोई क्वेश्चन नहीं है, चलो मैं ही फिर बोलता रहता हूँ। अच्छा, ये आपका ज़ेबा का क्वेश्चन है, व्हाट यू सजेस्ट इफ यू चॉइस लैंग्वेज अपॉन सोशियोलॉजी? इफ वी चॉइस लैंग्वेज अपॉन सोशियोलॉजी। सर वो पूछना ये चाहिए कि रीजनल लैंग्वेजेस इसके ऊपर प्रेफर करें या सोशियोलॉजी को प्रेफर करें। जी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलें ज़ेबा, ये तो अच्छा आपने क्वेश्चन किया। ये देखें, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, रीजनल लैंग्वेजेस में आपका स्कोर ज्यादा आता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और अगर मैं अपने भाई की बात करूं कि मेरे ब्रदर ने भी सीएसएस किया हुआ है, और जब वो कर रहे थे तो उन्होंने ऑप्ट की थी पंजाबी, और मैंने उस टाइम ऑप्ट किया था। खैर उस टाइम आप पंजाबी और सोशियोलॉजी दोनों ऑप्ट कर सकते थे 2009 में। तो उन्होंने पंजाबी ऑप्ट की और मैंने सोशियोलॉजी जो था, मुझे कहते हैं यार पंजाबी रख लो, क्योंकि ऑब्वियसली हम घर में भी पंजाबी बोलते थे और हमारा वो बैकग्राउंड भी वो था, तो मुझे मसला वैसे नहीं था। लेकिन पंजाबी में सिर्फ मुझे जो एक मसला था, अब मैं पंजाबी किस लिए एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं जो आपको ज्यादा एग्जांपल दे रहा हूं ना, वो मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, तो उससे ही आप बाकी चीजों से उसको रिलेट कर सकते हैं। पंजाबी हो या पश्तो हो, वो चीज एग्जांपल सेम ही रहेंगी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं बात। लेकिन पंजाबी पे वो जितना उसने टाइम स्पेंड किया मेरे भाई ने, अब यकीन माने कि वो दैट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी। कि मेरा ख्याल है कि वो 24 घंटे पंजाबी पढ़ते रहते थे। पंजाबी में ये हो गया, कभी वो बुल्ले शाह पढ़ रहे हैं, कभी कुछ पढ़ रहे हैं। अब वो इतना उन्होंने पंजाबी को पढ़ा कि वो पंजाबी के कुछ शेर मुझे भी याद हो गए। बात ये, और पंजाबी में उनका स्कोर भी 90 आया, 2009 की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन 2000 में उनका पंजाबी में स्कोर भी 90 आ गया, और उनको वो सेटिस्फाई भी हो गए। लेकिन वो 2009 में क्वालिफाई नहीं कर सके, उनका फिर बाद में हुआ था। अगेन वो फिर इंग्लिश में उड़ गए थे। बात ये है कि आपको जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, या तो आप ये समझते हैं ना कि आपको इंग्लिश आपकी 100% ठीक है, कि even you can write whatever you want to write, and that is error free, and that is up to examiner requirement, and you don't have much attention to spend much time in preparing your English material, then I think this is a very important that you can think, and you have some sort of contemplation that whether you need to prefer certain languages to sociology or gender studies or IR or some other subjects or not. But the thing is that if you don't have much time and you need to focus there, and again you are going to have certain those subjects which need more time, where you need to spend much time, so it would become very difficult for you. Yes, if you have 2 years and you don't want to appear in 2020-21, and you believe that because you have ample time, you have no responsibility, and you just want to cram certain things, then go for certain subjects. लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपके पास टाइम लिमिटेड है और आपने उस चीजों को करना है, अब देखिए ना, अगर मैं पंजाबी की बात करूं, जो मैं अपने भाई की आपसे एग्जांपल शेयर की, सो ही स्पेंट अराउंड 30 डेज एंड ही गॉट 90 स्कोर। अगर हम उसको प्रैक्टिकली देखें तो उन्होंने 90 स्कोर लिए, मैंने सोशियोलॉजी में लिए थे 73 उस टाइम। मेरे अगर 73 स्कोर थे तो मेरा ख्याल है कि मैंने हार्डली जो यही 5 डेज तक या मैक्सिमम, आप रिवाइज तो करते रहते हैं, लेकिन जब आप ओवरऑल पढ़ते हैं और आप कहते हैं कि यार मुझे चीजें आती हैं, ठीक है, तो मेरे लगे होंगे सिर्फ 5 डेज। अच्छा, मेरा जो स्कोर आया था ओवरऑल वो 720 था, और उनका 700 भी नहीं बन सका था। अब रीजन क्या है कि अगर आप एक रीजनल लैंग्वेज रख के 90 ले भी लेते हैं, पहली बात तो यह कि हर एक के 90 आते भी नहीं है, ठीक है, चलें आप मान लेते हैं कि आपके 90 आ जाते हैं, आप रख लेते हैं सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी में आपके आ जाएंगे 70 प्लस, ठीक है, आपका जो ओवरऑल गैप आएगा वो आएगा 15 to 20 मार्क्स का डिफरेंस। ये हर एक का आता भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी सपोज कर रहा हूं कि दिस इज ट्रू कि जो रीजनल लैंग्वेजेस उसमें मार्क्स ज्यादा आते हैं। ओके, तो आपका जो ये गैप है ये है 15 मार्क्स के अराउंड। तो अब ये जो आपने जो 25 डेज आपको एक्स्ट्रा बचे हैं, अगर आप ये किसी और सब्जेक्ट पे लगा देंगे तो वो 15 मार्क्स आप इजीली ओवरकम कर सकते हैं। So again, this is your own strategy. It depends on your own skills. What is your strength and what is your weakness. और दूसरी जो रीजन ये थी कि मैंने जो रीजनल लैंग्वेज की तरफ नहीं गया था, मुझे था क्रैमिंग में मेरी जान जाती थी कि यार ये काम ठीक नहीं है। मुझे ये था कि पेपर में जनरल क्वेश्चंस हैं जिस पे बंदा गप लगा सके, गप इन दिस सेंस दैट यू फील फ्री इन राइटिंग योर ओन आइडियाज, and on the basis of your own preparation
you can give much effective response in your paper. That is very important. कुछ स्टूडेंट्स की सोच ये होती है कि जो पेपर है, पेपर में सिर्फ वही चीजें हैं जो कि उन्होंने एग्जाम से पहले पढ़ी होती हैं. मसलन मैं अपनी बात करूं तो इवन आई स्टडीड वेरी वेल एंड प्रिपेयर वेरी वेल पाक अफेयर, लेकिन जब मैं पाक अफेयर के पेपर में करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखता था तो मैं बहुत खुश होता था और सबसे पहले उन्हीं को अटेम्प्ट करता था. Again, I'm going to say, whatever I'm going to say, you cannot take it as granted, but only you can have some sort of ideas. Then you can match with your own skills, and you can make some sort of comparison that what is your strength and what is your weakness. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि वो आइडियाज की जो ये रिकंस्ट्रक्टिंग उसमें आप ये कह लें कि उनके जो एक वो बॉन्डेज है वो उस तरह से डेवलप नहीं कर पाते और वो समझते हैं कि जो वो पढ़े पेपर में वही आए. मसलन कल मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया हुआ था कि सर मुझे ये बताएं कि ऐसे कौन कौन से हैं. तो मैंने कहा कि यार ये चीजें हैं, आप इनसे रिलेटेड ना तैयारी कर लें. मुझे कहता नहीं सर मुझे आप एग्जैक्ट बताएं और वो मैं फिर ना रट्टा मार लूंगा. तो अब ये देखिए ये कितने को आप रट्टे मारेंगे, इस तरह काम नहीं चलता. आप अपनी स्किल्स को डेवलप करें और स्किल्स की बेस पे आपको फिर टेंशन नहीं होगी, बजाय ये कि आप 3-4 कर लें और उसके बाद आप ब्लैंक हो जाएं. तो मेरा ख्याल है कि ये चॉइस आपकी है कि आपने रीजनल लैंग्वेज करनी है या नहीं करनी, लेकिन रीजनल लैंग्वेज में आपको टाइम ज्यादा चाहिए होता है, पहली बात. और दूसरी रीजन ये है कि हाँ, अगर तो फॉर एग्जांपल आप पश्तो की बात कर लें तो मेरा ख्याल है कि जो पश्तो है उसका मुझे आइडिया नहीं है कि उसमें कितना आपको टाइम चाहिए होगा, या जो पर्शियन है उसमें आपको कितना टाइम चाहिए होगा, या अरेबिक है. अगेन आई एम गोइंग टू से इट डिपेंड्स योर ओन स्किल कि एक बंदा जो है अगर वो फॉर एग्जांपल उसको अरेबिक बहुत अच्छी आती है और अरेबिक में उसने ऑलरेडी डिग्री की हुई है तो फिर तो अरेबिक बेस्ट है, इसका तो कोई सोशियोलॉजी के साथ लिंक बनता ही नहीं है. हाँ, अगर आपका बैकग्राउंड है और आपको चीजें आती हैं और आप ये समझते हैं कि आपको उसमें टाइम के लिहाज से कि यार ये जो सिलेबस है या जो पास पेपर्स हैं, इवन आप बगैर पढ़े आप वो अरेबिक के 3 क्वेश्चंस अच्छे कर सकते हैं सेटिस्फैक्टरी, तो देन गो फॉर अरेबिक, पंजाबी एंड सो ऑन. तो अगर आप समझते हैं कि यार पेपर में जो क्वेश्चन आया है, अगर आप कोई भी रीजनल लैंग्वेज के उसके पास पेपर्स देखें ना, और पास पेपर्स देख के अगर आपको कहता है जी कि जो बुल्ले शाह पे नोट लिखें, तो आप क्या 20 नंबर के लिए 20 नंबर का क्वेश्चन है. सो वेदर यू आर इन सच पोजीशंस टू राइट 8 पेजेस बाय योरसेल्फ और नॉट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इफ यू थिंक दैट यू कुड राइट एंड यू हैव सफिशिएंट knowledge relating to that poet, then go for that. Similarly with some other subjects. So I think this is the best way जिससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपके लिए वो सूटेबल है या आपके लिए सूटेबल नहीं है. क्लियर? Yes, sir. जी, ज़ेबा का एक और क्वेश्चन है कि in Sindh we had been learning from pre-primary in scenario, what would you suggest? जी ज़ेबा, मेरा ख्याल है कि ये मैंने आंसर आपको दे ही दिया है कि मैं भी पंजाब से हूँ और सारी जिंदगी मैंने भी पंजाबी बोली है, वही शेर, लेकिन मुझे वो चीजें नहीं आती थी ना, कि मेरा वो इनमें वो है ही नहीं, वो शेर व शायरी में कि आप वो, हाँ अगर तो आप इस तरह का मजाज है तो फिर बड़ी अच्छी बात है, फिर मेरा ख्याल गो फॉर दैट. अगेन वही कि आपको कितनी चीजें आती हैं, आपकी स्किल्स क्या है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए उसमें ज़ेबा मुझे नहीं पता कि आपका क्या इंटरेस्ट होगा या आपका कितनी ग्रिप होगी एक सर्टेन सब्जेक्ट में. मैं सिर्फ आपको ये कहूंगा कि आप पास पेपर्स देखें. पास पेपर्स की बेस पे अगर आप ये समझते हैं कि आपको वो चीजें आती हैं और उस पे आपको सिर्फ 1 क्वेश्चन प्रिपेयर करना है या मैक्सिमम आपको 2 क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, तो देन गो फॉर दैट. अगर एक वो सब्जेक्ट जिसमें आपको 4 क्वेश्चन खुद ही प्रिपेयर करने पड़ेंगे, तो इट मींस उसके लिए आपको ज्यादा टाइम चाहिए होगा. तो वो आपके लिए उसके तो वो ज्यादा टाइम चाहिए होगा, कर तो आप सकते हैं, लेकिन अगेन फिर उस डिपेंड करता है ना कि आपको उसमें कितने वीक्स चाहिए होंगे. तो दिस इज योर ओन स्किल कि आपको खुद रियलाइज करना चाहिए कि इसकी टाइम मैनेजमेंट क्या होगी. अगर किसी का कोई भी बैकग्राउंड नहीं है ना, तो फेयरली आई वुड से दैट ओनली यू नीड टू हैव जस्ट 5 days, दैट वुड बी सफिशिएंट. इससे ज्यादा नहीं होगा. तो बाकी आप खुद कंपैरिजन कर सकते हैं सर. कि अगर आप डिपेंड करता है कि आप कितना उस पे टाइम लगेगा. सर जी जी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है. सर अस्सलाम वालेकुम. मैंने एक्चुअली ये पूछना था कि जैसे हम सिंध में सिंधी फ्रॉम द बेसिक पढ़ते हैं ना, बेसिक से ग्रामर से लेके हम अपने आइडियाज भी कन्वे कर सकते हैं और रिटन भी अच्छी खासी होती है. और मैंने सीएसएस के पेपर्स देखे थे तो उसमें से जितनी मुझे नॉलेज थी उस हिसाब से मैं 3 to 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकती. तो फिर तो तो बिस्मिल्लाह सोशियोलॉजी मुझे बिल्कुल भी नहीं आती और मैंने 1-2 बार पढ़ी है बस, उसके बाद कभी आप छोड़ दें सोशियोलॉजी.
फिर तो देखिए, फिर तो सोशियोलॉजी तो ये सोसाइडल है ना, खाम खा आप अपना टाइम भी जाया कर रही हैं। और इस टाइम तो खैर जाया नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आप वो एक स्टूडेंट की थिंकिंग से देखें तो वैसे हमारे जो बैचमेट है ना सिंधी में, उनका बड़ा अच्छा स्कोर था, दिस इज ट्रू। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि शायद वो उसको पढ़ाने की वजह से और आपका इंटरेस्ट होने की वजह से ये वो चीजें तो आपके पहले ही आपको आती हैं। और जिस तरह आप कह रही हैं कि आपने पेपर्स को गो थ्रू किया है और इसमें इवन 3 क्वेश्चंस आपको आते हैं, गो फॉर इट। अच्छा, जो एक चीज मैं आप लोगों को गाइड करूंगा बीइंग सीनियर, वो ये है कि सर्टन जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपकी स्ट्रेंथ है, irrespective of academy approach that they are going to offer or not. Don't get worried and just adopt your own subject जिसमें आप समझते हैं कि आपको चीजें आती हैं। तो उसमें आप ना मेरी बातों में है या किसी और की बातों में है, या कोई भी सीनियर आपको कहे तो देन लीव इट। जो आपकी स्ट्रेंथ है, देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू अपीयर इन एग्जाम बाय योरसेल्फ एंड यू नो वेरी वेल where you can write in a better way and where you would file yourself and you would feel yourself in a trouble and you cannot give certain examples by yourself. So that depends on your interest. So interest is your key element that would make you convenient in certain subjects. So go for it. अच्छा आसिम, आपका क्वेश्चन था कि सर आई हैव 30-40% ग्रिप ओवर स्टैटिस्टिक्स एंड इट्स अल्टरनेटिव इज सोशियोलॉजी व्हिच इज कंप्लीटली न्यू सब्जेक्ट टू मी। व्हाट डू यू सजेस्ट आइदर टू परस्यू स्टैटिस्टिक्स और ट्राई सोशियोलॉजी? ठीक है। अब अगेन आसिम, आई हैव नो बैकग्राउंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगा कि दिस इज अ गुड थिंग दैट यू हैव 30-40% of that syllabus. But the thing is, if you are going to, even I suppose that you know 80% of statistics and you need to prepare only 20%. Again, how much time is required to overcome that 20%? That is very important. Because if 20% is going to be covered within 1 month, then I would not say that it is a very suitable option. But even if you know that I have just 10% or I have just 5% knowledge of any subject and I have to cover 95%, but 95% I can do with 5 days or maximum 10 days. So I think then this is best option. So that depends on you, that how much time you need more to spend in order to have a full grip, in this sense that you can attempt 100% question in your examination. That is very important. So just analyze by yourself that how much time is required for 60%. Clear, Asim? Okay, और चलें, अगर हम बात, कोई और क्वेश्चन है या मैं फिर कोई और पॉइंट्स डिस्कस करूं? अगर आपका क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? जी आमना, आमना आपका वो हैंड तो आ रहा है कि यू वांट टू शेयर समथिंग, लेकिन आपने वो अपने अपने को म्यूट किया हुआ है। मेरा क्वेश्चन ये है कि सीएसएस और पीएमएस में क्या फर्क है दोनों में? सीएसएस पीएमएस में क्या फर्क है? मींस कि पीएमएस और सीएसएस दोनों सेम है? सेम है? अच्छा, मुझे ये बताएं। हाँ जी। देखिए जो पीएमएस है, पीएमएस में जो भी आप सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं वो 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। उसमें भी यानी कि आप कंपलसरी 600 है और ऑप्शनल 600 है पीएमएस में, और सीएसएस में भी 600 है। लेकिन सीएसएस में जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो 100 मार्क्स के हैं, और पीएमएस में आप जो भी सब्जेक्ट उठाएंगे वो 200 मार्क्स का होगा। एक तो ये है। दूसरा ये भी है कि जो ग्रुप्स में है कि सीएसएस में ग्रुप्स डिफरेंट हैं, डिफरेंट इन दिस सेंस, अब अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन की बात करें तो हो सकता है कि आपको वो हो कि यार इस सब जो ग्रुप है, इस ग्रुप्स में वहां के जो ग्रुप्स हैं उन दोनों में सिमिलैरिटी नहीं हो रही, कि आप ये कुछ जो सब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं ज्यादा ले रहे होते हैं, और तो आप ये कहें कि आपका 600 उधर भी कवर हो जाएगा, तो नॉट नेसेसरली। तो उसके जो ग्रुप्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से आपको हो सकता है कि एक आधा सब्जेक्ट चेंज करना पड़े। और थर्ड ये है कि जो पीएमएस है, पीएमएस में ऐसे 200 आवर्स का होता है, आई थिंक सो। पीएमएस मैंने दिया नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि 200
मार्क्स का ऐसे होता है, और सीएसएस में जो है वो 300 मार्क्स का है। बाकी चीजें, एक जो मेजर डिफरेंस है पीएमएस का, वो ये है कि वहां पे 1 पेपर एमसीक्यूज है जिसमें स्टूडेंट्स फेल होते हैं सबसे ज्यादा। पीएमएस में मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो जो सीएसएस है वो आसान है एज कंपेयर टू पीएमएस। उसकी रीजन क्या है? There are 3 fundamental factors on the basis of which you can come to such conclusion that CSS remains a very easy exam, because in PMS there are 3 areas in which students are going to get failed, mainly essay, second general knowledge 1 paper MCQs, and third park affair. Lot of students they get failed in park affair in PMS. CSS में आपको फायदा ये होता है कि CSS में आपका जो एग्रीगेट बनता है उसमें आपका जो करंट अफेयर है, आपका पाक अफेयर है, ठीक है, और आपका एवरीडे साइंस जीके, यानी कि इसको हम ओवरऑल सबको जीके का नाम दे देते हैं। तो इन तीनों का आपका जो एग्रीगेट है वो 120 होना चाहिए, कि अगर आपका एक सब्जेक्ट में आपके 80 भी आ जाते हैं और बाकी 2 में आपके 20 भी आ जाते हैं तो यू विल बी कंसिडर्ड पास स्टूडेंट। तो पीएमएस में ऐसा नहीं है, तो इसलिए पीएमएस में लोग ज्यादा फेल होते हैं एज कंपेयर टू सीएसएस। बाकी वो चॉइस ठीक है, वो सेम ही है तकरीबन, बस वो जीके थोड़ा सा वो क्रैमिंग वाला हिसाब आ जाता है कि वो रिवर कहाँ पे है, तो वो एनिमल वहां की पॉपुलैरिटी क्या है और इस तरह की चीजें, करेंसी कौन सी है, एयरलाइंस के नाम क्या हैं, वो ये थोड़ा सा वो बच्चों वाली चीजें आ जाती हैं। सीएसएस में इस तरह की चीजें ऑब्जेक्टिव तो आती तो है इस तरह की, लेकिन इतना वो इम्पैक्ट नहीं आता। फिर वहां पे नेगेटिव मार्किंग भी है पीएमएस में, सीएसएस में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, ये फर्क है। फिर प्रमोशन का थोड़ा सा डिफरेंट मेजर है कि अगर आपने कल को सेक्रेटरी बनना है तो वो अब सीएसएस करके तो बन सकते हैं, पीएमएस करके तो नहीं बन सकते। नो डाउट कि वो बड़ा अच्छा है, आपका स्टार्ट बड़ा अच्छा मिल जाता है कि बीइंग, शुरू में आपको वो एज अ सेक्शन अफसर के तौर पे काम करते हैं, वो उसके बाद आप फील्ड में एसी आ जाते हैं, तो ज्यादा डीसी बन के रिटायर हो जाएंगे। सीएसएस में आपके पास अपॉर्चुनिटीज बड़ी हैं, ये है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी श्योर सर, ये सोशियोलॉजी के लिए कौन सा बैकग्राउंड मतलब कि अच्छा होगा? जैसे मेरा बैकग्राउंड है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, तो अभी सोशियोलॉजी का मुझे नहीं पता कि मेरा है कि नहीं है, और बाकी इसके अलावा सोशियोलॉजी में इंक्लूड क्या क्या होता है, ये थोड़ा सा ना गाइड कर दें। मुझे ये बताएं अजीज साहब कि आपके बाकी सब्जेक्ट्स क्या हैं ऑप्शनल? सर बाकी सब्जेक्ट्स अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्रिमिनोलॉजी वगैरह है, और बाकी एक दो सिलेक्ट करने वाले हैं जिसमें सोशियोलॉजी वगैरह। पीएमएस जैसे निकलता तो उन्होंने सारा बता दिया। सॉरी आपकी आवाज वो कंफ्यूज हो रही है, दोबारा बताएं। सर ऑप्शनल के अंदर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है, वो 200 मार्क्स का है, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 100 मार्क्स की है, और जेंडर स्टडीज ये हमारे 400 मार्क्स कवर हो गए, और बाकी सोशियोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी के ऊपर मैं देख रहा हूँ, तो सोशियोलॉजी के बारे में बता यार जो क्रिमिनोलॉजी है वो भी बड़ा इजी सब्जेक्ट है, देयर इज नो एनी रॉकेट साइंस, और जो सोशियोलॉजी है वो भी इजी है, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्रिमिनोलॉजी भी स्कोरिंग है और सोशियोलॉजी भी स्कोरिंग है। सोशियोलॉजी में जो मैं वैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, अपना भी करता हूं और उसके बाद जो बाद में मैं पढ़ाता भी रहा हूं तो मैं उसकी बेस पे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। सोशियोलॉजी में आप ये तो कह सकते हैं ना कि कम, वैसे मैं इस चीज को नहीं मानता, कुछ स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि ये सब्जेक्ट टारगेट किया गया है, वो टारगेट नहीं किया जाता। उस दफा बेसिकली मार्किंग ठीक हो जाती है और स्टूडेंट्स को रगड़ा लग जाता है, तो स्टूडेंट समझते हैं कि टारगेट हो गया। टारगेट कोई नहीं होता, कि उनके बस थोड़ा सा जो पॉलिसी है वो मार्किंग पॉलिसी वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है कि आप जो डिजर्व करता है उतना ही स्टूडेंट्स को आप उतने ही ग्रेड्स दें या उतने ही मार्क्स दें। सोशियोलॉजी में कभी भी स्टूडेंट्स के मार्क्स कम नहीं आए अगर वो अच्छा लिखाते हैं तो। अब इवन के देखें कि कुछ सालों में ये कहा गया था कि ये इन्वायरमेंटल साइंस में कोई बंदा पास ही नहीं हुआ था, ठीक है। इसी तरह अब तो खैर सब्जेक्ट चेंज हो गया, फिलॉसफी में कभी वो ऊपर उठा जाती थी फिलॉसफी, कभी वो बिल्कुल नीचे आपको ले आती थी। इसी तरह अगर आप मैथ कॉम की बात करें, जर्नलिज्म की बात करें, अगर हम इसकी, हाँ सीएसएस में मेरा ख्याल जर्नलिज्म ही है, हाँ अगर जर्नलिज्म की बात करें तो जर्नलिज्म मेरा ख्याल सबसे इजी सब्जेक्ट है। उसमें टोटल 3-4 टॉपिक्स हैं वही पेपर में आते हैं। मसलन एडवर्टीजमेंट का क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है, और एडवर्टीजमेंट के अलावा पब्लिक रिलेशंस का क्वेश्चन आना ही आना है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है,
और एक ओवरऑल टीवी मीडिया का रोल क्या है। तो यानी कि ये वो चीजें हैं कि मेरा ख्याल है कि 3 आवर्स में आपकी प्रिपरेशन हो जाए मैथ्स कॉम की। बट द थिंग इज कि मैथ्स कॉम या तो आपको 90 मार्क्स दे जाएगा, या मार्क्स इसमें जर्नलिज्म में या तो आपके 90 मार्क्स आ जाएंगे या फेल हो जाएंगे। तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। When you talk of sociology, so there is some sort of consistency. कि students, if they are not going to have good marks and even they have not attempted very well, so likely they are going to get more than 50s. And if they prepare very well, and there I know certain instances where students were successful in getting more than even 80, more than 80s mark, and many students they got, some students I know some students they got 84, 86 and 81 and so on. But on average, you can say that students they can get easily more than 70 marks in sociology. And there is also some sort of certainty, and this is easy. But again, I'm going to say that when you have some sort of, it becomes really very difficult for you to have a very to have very clear cut answer that whether you need to go for sociology or for criminology or some other discipline. I think so that they are all related with each other, and you can get good marks. But yes, to some sort of fluctuations in this sense, that in sense of marking and so on. So that's up to you. I'm not going to say anything. All are easy, all are compatible with you, and you will not have some. You are not required to have a certain specific background for that. I don't think so. So the choice is up to you. क्योंकि वो उसकी एक रीजन ये भी है कि एक सब्जेक्ट जो मैंने पढ़ा था या जिसमें मैंने अपीयर हुआ हूँ और जिसमें मैं अब पढ़ा भी रहा हूँ, तो एक देयर इज सम एलिमेंट ऑफ बायसनेस कि मैं तो इसी को सपोर्ट करूंगा ना। तो भाई पेपर में तो मुझे आपकी वेलफेयर की वो ज्यादा फोकस है ना, उस पे आपकी वेलबींग पे और आपके जो फ्यूचर कैरियर्स हैं मुझे उन पे ज्यादा फोकस है, जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि दिस इज अप टू यू। सर ये सोशियोलॉजी के अंदर होता क्या क्या है, ये मतलब कि ओवरव्यू दे दें इसका, गाइड कर दें। ओवरव्यू दे देते हैं जी। ओवरव्यू ये है कि जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी डील करती है सोसाइटी के साथ, ठीक है। So what do you mean by society? Society means a group of individuals who constitute society. And why a group they want to live in a society, as to what extent individuals feel themselves free from society, and what are the social opportunities for individuals in a particular society. For example, when we say, you can take example of corona. This is a very hot issue these days. कि आपका दिल, अगर हम वेस्टर्न सोसाइटी की बात कर लें, तो वेस्टर्न सोसाइटी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना कि आपने वेल करना है या आपने इस तरह वो चलना है। तो अब देखें कि इवन वो पहले मुसलमानों को टारगेट करते थे और वो कहते थे कि अगर आप इवन यूके की बात करें तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो वेल है दैट इट वाज गोइंग टू कंसीडर एज अ मेजर बैरियर, ठीक है। और उसमें वो कहते थे कि ये, और आपका आइडेंटिटी के लिहाज से इवन आप टेररिज्म की बात करें तो टेररिज्म में जो एक वेल था दैट वाज गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज अ मेजर फैक्टर। अब जो ये आप उसको वो करते हैं, मास की बात करते हैं, तो ये भी तो किस्म का वेल ही बन जाता है ना। तो लेकिन अब तो ये एक्सेप्टेबल होना शुरू हो गया हर जगह। तो बात ये है कि हम कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं कि इंडिविजुअल्स किस हद तक अपने रोल्स में फ्री होते हैं, या आपका दिल नहीं भी करता कि यार मैंने ये मास्क नहीं पहनना। तो हो सकता है कि आप जब आप कहीं पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या कहीं पे पब्लिक प्लेस पे जाना चाहते हैं, तो जो लोग हैं वही आपको कहेंगे यार इसमें सेंस नहीं है कि ये बड़ा एजुकेटेड है, या इसको अपनी नहीं तो दूसरों का ही ख्याल करके मास्क पहन लेता। तो हम कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल वही करते हैं जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है। तो इंडिविजुअल्स, क्योंकि जो मैन इज अ सोशल एनिमल और वो ग्रुप के साथ रहना चाहता है, तो जब आप ग्रुप में रहते हैं तो ग्रुप का आपकी पर्सनैलिटी पे इंपैक्ट होता है। दैट इज तो ये उसमें एक तो ये उसका मेजर आ जाता है कि सोसाइटी का रोल क्या है इंडिविजुअल पे। दूसरा जो उसमें एक चीज आ जाती है, जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं और सोसाइटी की बात करते हैं, तो सोसाइटी का कल्चर होता है। कल्चर क्या है कि वे ऑफ लाइफ, ठीक है। कि मसलन अगर हम पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करें तो पाकिस्तानी सोसाइटी की और कोई भी जो कल्चर है उसके कुछ फंडामेंटल कोई भी जो कल्चर है उसके सर्टेन एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। मसलन कोई जो कल्चर होगा वो रिलाई करेगा फॉकवेज पे, नॉर्म्स पे, वैल्यूज पे। ये हम चीजें कर लेंगे बाद में, डोंट वरी। और ये किस तरह से इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। एक तो ये कल्चर का ओवरऑल जो रोल है आपका, और मसलन हमारी सोसाइटी में आप पूछे किसी से कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो क्या बनना चाहेंगे आप? सीएसएस की, चले आप तो सीएसएस कर रहे हैं ना,
तो अब ये देखें कि आप अगर यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, या स्पेशली आप यूरोपियन कंट्रीज में, यूके की मैं इसलिए एग्जांपल देता हूं क्योंकि हम उनकी कॉलोनी में रहे हैं और हम अभी भी उनको वो समझते हैं कि दे आर आइडियल एंड सो ऑन। तो अब वहां की बात करें और यहाँ पे प्रेफरेंसेस की बात करें तो हर बंदा कहेगा मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ। तो अगर आप उन कंट्रीज की बात करें तो हो सकता है कि आपकी जो पुलिस है दैट इज नॉट योर फर्स्ट चॉइस। क्यों चॉइस नहीं है? कि वहां पे जो पुलिस वाला है उसके पास वो चीजें हैं ही नहीं डिस्क्रेशनरी, जिस तरह पाकिस्तान में वो डिस्क्रेशनरी पावर्स को इस्तेमाल करके लोगों पे अपना इन्फ्लुएंस को एक्सर्ट करते हैं। तो ये जो चीजें हैं कि हमारे यहाँ जो, या तो आपके यहाँ मोस्टली जो आप चीजों को आइडियलाइज करते हैं वो आप ब्यूरोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में है, या सेकेंडली आप फिर वो आर्मी के कॉन्टेक्स्ट में वो ले जाते हैं। तो यहाँ पे जो चीजें ऑप्शन नहीं है आपकी, तो हमारा क्योंकि कल्चर उस तरह का है जिसकी वजह से हमारी थिंकिंग वो है। या आप कहें कि आप में से कभी किसी ने सोचा होगा कि मैंने टीचर बनना है, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि हमारे यहाँ जो टीचर है उसकी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, ना उसको सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है। कि आप अगर गाड़ी चला रहे हो और आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं कि यार मैं टीचर हूं इसलिए मुझे जाने दो या मुझे ये फेवर दे दो, नॉट पॉसिबल। और आप कहेंगे कि आई एम अ ब्यूरोक्रेट या आई एम सर्विंग इन द पोजीशन ऑफ दिस दिस दिस, तो लोग बड़ा इंस्पायर होते हैं और आपको अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं। तो और अगर आप रिस्पेक्ट करें यूरोपियन कंट्रीज में और आप कहें कि यू आर एंगेज्ड इन एकेडमिक्स, तो आपकी बड़ी रिस्पेक्ट है। अब आप पाकिस्तान में पीएचडी भी कर लेना, तो पीएचडी करके भी आप किसी को इंट्रोड्यूस करें कि आई एम पीएचडी होल्डर, तो उन्होंने कहना तो हम क्या करें भाई? क्योंकि हमें अवेयरनेस ही नहीं है कि यार जो पढ़ा लिखा बंदा है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, या सोसाइटी उसको किस तरह से ट्रीट करे। तो जो कल्चर है, कल्चर वेरी करता है फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। तो सोशियोलॉजी में हम ये भी देखते हैं कि जो कल्चर है, कल्चर का इंडिविजुअल्स पे क्या इंपैक्ट आता है, ठीक है। प्लस हम ये देखते हैं कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी में चेंज किस तरह से आती है, ठीक है। सोशल चेंज के सर्टेन फैक्टर्स क्या हैं। मसलन हम कहते हैं कि उसमें ज्योग्राफी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें टेक्नोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें कल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर ये होता है कि जो कल्चर है, ये कल्चर किस तरह से चेंज हो जाता है, ठीक है। तो कल्चर किस तरह से चेंज हो जाता है, उसमें सर्टेन आपका वो इमिग्रेशन फैक्टर्स भी है कि फॉर एग्जांपल आप ज्यादा अगर हम बात करें हमारी, अगर हम पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करें तो पाकिस्तानी सोसाइटी में जब हम क्लैश ऑफ कल्चर की बात करते हैं तो हम उसको ज़िया रजीम के साथ लिंक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ज़िया रजीम में जो इन्फ्लक्स हुआ था अफगानियों का पाकिस्तान में, और फिर वो हमारी पॉलिसी इस तरह की थी कि जिस वजह से उनका कल्चर हमारे यहाँ प्रमोट हो गया। तो हम कहते हैं कि ये जो है आपका जो माइग्रेशन है एक वो चीज इंपॉर्टेंट है, उसमें फिर आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, और उसमें आपका कल्चर डिफिजन मीन कि कुछ आइडिया जो स्प्रेड करते हैं फ्रॉम वन सोसाइटी टू अदर सोसाइटी। तो अगेन इसमें रोल ऑफ मीडिया, तो यानी कि ये एक जनरल चीजें हैं। एक तो ये भी सोशियोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं। फिर हम कहते हैं कि जो इंडिविजुअल में सर्टेन इश्यूज डेवलप हो रहे होते हैं उसकी रीजन क्या है। मसलन सर्टेन हम इश्यूज की बात करें तो वो इश्यूज क्या हो सकते हैं। हम कहते हैं कि जिस तरह एक डिवोर्स रेट है, या हाँ डिवोर्स रेट है, क्या डिवोर्स रेट के रीजंस क्या हो सकते हैं हमारी सोसाइटी में, कि क्यों डिवोर्स रेट आजकल बढ़ रहा है, या अर्बनाइजेशन क्यों बढ़ रही है उसकी, ठीक है। और फिर उसके अलावा हम कहते हैं कि जो आपकी पॉलिसी है और उस पॉलिसीज का एक सर्टेन इम्पैक्ट जो है उसको आप एनालाइज करें इंडिविजुअल में। तो ये जो कॉमन सेंस की चीजें हैं कि जो इंडिविजुअल से रिलेटेड होती हैं वो सोशियोलॉजी में हम चीजें पढ़ते हैं। प्लस जो इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है वो रूरल और अर्बन सोसाइटी। पेपर में या तो कम्युनिटी का क्वेश्चन आ जाता है हर दफा, और कम्युनिटी का ना है तो वो सोसाइटी का जरूर आ जाता होता है। जो इस और एक कम्युनिटी का आ जाता है कि रूरल अर्बन कम्युनिटी का, या रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। अब अभी भी हमने 2020 का भी पेपर पढ़ा तो देखिए उसने कम्युनिटी का पूछा हुआ था कि टाइप ऑफ सोसाइटी कम्युनिटी एंड सो ऑन। तो एनीहाउ, तो अब बात यह कि इसमें एक हम ये देखते हैं कि जो रूरल सोसाइटी है, रूरल सोसाइटी का लाइफस्टाइल किस तरह से आप देखते हैं, अर्बन सोसाइटी का डिफरेंट आप किस तरह से देखते हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ये रूरल और अर्बन सोसाइटी को किस तरह से आप कैरेक्टराइज करते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इनको हम देखते हैं। प्लस हम सर्टेन सोशियोलॉजिस्ट को देखते हैं, जो सोशियोलॉजिस्ट का कंट्रीब्यूशन है वो भी रिलेटिंग टू इंडिविजुअल बिलोंगिंग से रिलेटेड है, कि इंडिविजुअल किस हद तक फ्री है सोसाइटी में। अब देखिए फॉर एग्जांपल कि आपने अगर एक ब्यूरोक्रेट बनना है तो ये अब आपकी बस आपका दिल तो है ना, आप बनना चाहते हैं, तो क्या अगर आपकी जो ख्वाहिश है वो सोसाइटी पूरी कर देगी कि हाँ जी जनाब आपको दिल कर रहा है तो इसलिए हम आपको जो है वो इस पोजीशन पे बिठा रहे हैं? नो। तो उसके लिए सोसाइटी ने एक सर्टेन क्राइटेरिया डेवलप किया हुआ है कि आपको ये एग्जाम में पास करना पड़ेगा, पास होंगे तो देन यू वुड बी एलोकेटेड टू दिस प्रोफेशन। तो ये जो चीजें हैं कि हम कहते हैं कि किसी हद तक इंडिविजुअल आजाद है और किसी हद तक नहीं है। मसलन सीएसएस करना है या नहीं करना, इस हद तक आप आजाद हैं, लेकिन अगर करना है तो प्रोसीजर क्या होगा वो सोसाइटी बताएगी।
तो ये जो relationship है, that is very complex as to what extent you believe that individuals are free in their roles. At the same time, individuals, they find themselves under certain social constraints, and they feel themselves in a very, you can say, in a narrow perspective, that things they are not in their own control, and they try to express themselves in a society depending on the expectations of the general individuals. तो ये जो एक बैलेंस होगा उसको भी हमने यहाँ पे मेंटेन करना होता है। और जितने भी सोशियोलॉजिस्ट आए हैं उन्होंने इन्हीं पे ज्यादा फोकस किया है, उसमें रिलीजन का क्या रोल है, उसमें आपकी क्लास का क्या रोल है, और उसमें कल्चर के पार्ट कौन से हैं। फॉर एग्जांपल हम मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर की बात करते हैं, तो मटेरियल कल्चर क्या है? मटेरियल कल्चर ये है कि जिस तरह हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि रोड्स हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स हैं, ये मटेरियल कल्चर है, या ये लैपटॉप है, ये मटेरियल कल्चर है, ठीक है। नॉन मटेरियल कल्चर क्या आ जाता है? नॉन मटेरियल कल्चर में आपकी थिंकिंग आ जाती है, आपकी वैल्यूज आ जाती हैं। तो किस हद तक जो मटेरियल कल्चर है और नॉन मटेरियल कल्चर है, ये आपके जो रोल है उसको इन्फ्लुएंस करता है। और फिर वो रिसर्च है कि आपने अगर इंडिविजुअल्स को करना है तो रिसर्च मेथड्स कौन से होंगे। तो दैट इज द ओवरऑल अप्रोच अबाउट सोशियोलॉजी। क्लियर? Any other question? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी दो क्वेश्चंस हैं। एक तो ये कि अगर हम सीएसएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करें फ्रॉम द वेरी स्क्रेच, तो क्या ये फेब तक हमारे लिए पॉसिबल है कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी से हो सकती है? और सेकंड ये क्वेश्चन है कि ऐसे अगर रिगार्डिंग ऐसे हम ऐसे लिख रहे हैं रोज डेली बेसिस, तो उसकी असेसमेंट के लिए हमारे पास टीचर का अवेलेबल होना जरूरी है? अगर नहीं है तो फिर हम खुद से सेल्फ असेसमेंट किस तरह करें? चलिए, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, पहला जो आपका क्वेश्चन था कि if you want to take attempt in 2020, so whether you have sufficient time to get prepared, so I would say yes. देखिए, अभी भी आपके पास तकरीबन जो है ना, you have period of 9 months, and frankly speaking, you have your own capacity, and even if you're going to have certain routine, this is our human psychology that you get frustrated. So I think so that because you cannot focus for a longer period of time just on a one exam, so it's a better that you have to show full dedication and a commitment for a certain time period, and then you have to get out of it. That is the best strategy, and don't try to prolong it for a longer period of time. So even if you have 4 to 6 months, I'm not going to say that maybe for a few students 3 months are sufficient, but students who don't feel good and who feel that they have some sort of deficiencies and they require longer period of time as compared to other students, so you can say on average you need to have 6 months, but still you have 9 months, and I am 100% fair with you. 9 months, they are going to be considered sufficient. The only thing is that you need to show to some extent of dedication, that you have to work, you have to study, and you need to compromise your certain social activities. This is very important. And on average, if you want to study for 4 to 6 hours for 9 months, I'm pretty sure that you can do it. So this is sufficient time, first of all. Second thing is that how to improve your English, especially when you talk of your essay and you talked of your assessment questions. That's very important, because whether you are going to spend certain time on other areas or not, but at the same time at least 30 to 40 minutes you need to allocate to your English subject. And this is a very best option even if you're going to write certain thing. Okay, the thing is that you have to do it. This is true. There's no any debate and there's no any confusion. But the thing is that how you can have some sort of assessment, whether you can do assessment by yourself or not. I would say that you cannot do assessment by yourself. The reason behind it is that if you have certain own thinking and you have reproduced in that angle, how you can make some sort of assessment.
because there must be someone who can pinpoint your areas and who can pinpoint certain deficiencies and flaws, who can keep you on a right track. Then I think there would be better assessment. Okay. And the other thing you said, that if there is unavailability of teacher, uh, I would say you have to manage. Manage in this sense that your evaluation should be on regular basis. Regular mean on daily basis. I'm not going to say that you're supposed to write 2 or 3 pages. At the same time, you are going to get evaluation on the same day. I would suggest you start writing from 5 to 10 lines. Frankly speaking, when I was preparing, I used to write only for one paragraph on daily basis. And then I gave that paragraph to my brother, my elder brother, and he was going to make some sort of evaluation, and he suggested what to focus and what could be the sentence structure and what are your weaknesses. So accordingly, another day, considering those guidelines and considering and by following certain instructions, I made another paragraph. Again, then there were certain errors, they were different from previous day. So basically, with the passage of time, I was in such position that I could write a paragraph error-free. When you can write a paragraph error-free, it means you can write essay error-free, even it consists of 2,500 or even 5,000 words. So that is not important. The thing is that if I would ask you that you can write a paragraph, I'm 100% sure if you are not good at English, even you cannot write a single sentence correctly. But our problem is that whenever we approach someone, we try to write 4 or 5 pages. So it becomes very difficult. At the same time, for example, when some students approach me for checking and something like that, so I would say that, okay, I will read just 1 paragraph, not more than that, because the reason is that there are certain mistakes that you are going to commit in your first paragraph. The same repetition is going to go through across the whole essay. So it is immaterial that every time I'm going to circle and every time I'm going to say that you have certain mistakes, certain mistakes, certain mistakes. The best strategy is that whatever availability you have and whoever you are going to approach, just try to send or just try to give a 1 paragraph. And after getting evaluation, try to make another paragraph. So basically, then it would be easy for you, because on first day you will make 10 mistakes. Suppose we are going to suppose it that for instance, on first day you are going to make 10 mistakes. On the other day you are going to make 9 mistakes. On the third day you're going to make 8 mistakes. So with the passage of time, the level of your errors that is going to be overcome. And the thing is that if you have few mistakes, you can concentrate much effectively and you can try to overcome. But if your error is just errors, they are going to touch high figure, then it is also impossible for you to grasp the overall ideas and to make immediate change in your attitude as well. Because individuals, they have their own certain thinking and they love to write on certain angles. Because if I say that write a note on terrorism, something like that, and all students, they would touch different angles. At the same time, they were going to focus on different sentences. Because some, they would focus on past example. Some students, they will focus on future examples, future steps, how we are going to overcome it. And some students, they are going to narrate the current scenario. So basically, your concern is whatever you are going to write, so it should be error-free. So when you write on daily basis, you can analyze by yourself that basically which sentence you are going to focus more, which proverbs you are going to use, and which propositions on which you are going to confuse yourself. So basically, it would be good for your own assessment. As well as your own assessment is concerned, you can focus and you can realize that what areas you are going to focus, what sort of vocabulary you are going to use, and what sort of adjectives and something like that. But when you talk of the external assessment, so I think so obviously you need to rely on certain teachers and you need to manage. But try to manage with the little material. Don't try to give much material in the beginning. And you can say that and this is also human psyche, that if you're going to give a full-fledged essay and that is going to be marked red,
automatically psychologically you feel yourself inferior, and you believe so that this is very difficult, you cannot do it, and this is a competition, you're going to compete students across Pakistan, so things they are not in control, and teacher would also discourage you because you have a lot of mistakes. So I believe that if you write just a paragraph on daily basis, and even you have certain mistakes, but it is okay for you psychologically, you have no issue, and you have more time to improve. So I would suggest, yes, this is a good try to write on daily basis. Any other question, please? No question. Okay, so finally, I would conclude that when you talk of sociology remains a very easy subject because it is very conceptual. There are certain concepts which are very important, that how you are going to use, and what sort of lessons, because many questions they are relating to your own opinion. So if you are good in explaining certain ideas and you can relate to various issues as well, so I think so then sociology is the very best option for you. Another thing is that because sociology relates with individuals, and you are going to discuss individual behaviors, at the same time you are going to study certain sociologists, and when you talk of essay, even that sociologists can be helpful for you, that you can develop certain theories of those sociologists, and then you can apply to your own social issues as well, that this sociology was of opinion that this factor is very important and we are lacking in this thing. So if government is going to focus on these areas, so obviously we can overcome such issues and so on. Again, it depends on you, that what sort of knowledge you have gained, and what level of satisfaction you have achieved, and what is the level of your applicability of the knowledge to various issues. So everything is important, and it depends on your own approach. So basically I would say that if you are very smart in relating various issues and in connecting one angle to other, then sociology remains very good option. And again, I would say that it is a less time consuming subject. In a few days you can prepare yourself very well. At the same time, comparatively, there is some sort of you can say predictability as well, that what is the you can say the lowest marks you can expect. Otherwise, on average, you will get marks relating to certain trends. And then I would say that what should I say, Anyhow, there's overlapping with other disciplines as well to some extent. So these are the possible merits on the basis of which sociology remains a very feasible and viable option for you. And in the end, if you have any confusion, you are most welcome. Otherwise, I think we should stop this session now. So it's up to you.